Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will basically discuss कि यार काफी लोग confused हैं sir. I have checked my answer keys and my ZAT attempt according to the Cracku और मुझे काफी कम marks आ रहे हैं especially in the DM and the VA section, right? So let me tell you one story कि जैसे ही आंसर की रिलीज हुई थी within 1 or 2 hours Cracku released their correct answers, right? So I don't think it is possible कि आप इतनी जल्दी अपने पोर्टल पे करेक्ट आंसर सभी क्वेश्चंस के अपलोड कर दो एंड पर्सनली आई हैव रिव्यूड ऑल देयर आंसर्स और मुझे काफी डिस्क्रिपेंसी लग रही है एंड द बेस्ट थिंग और द वर्स्ट थिंग दैट आई फाउंड इज कि उनके क्वांट्स में भी काफी मिस्टेक्स हैं उनके क्वांट्स अटेम्प्ट्स में भी दे आर रिवाइजिंग इट टाइमली बट you can see that if they are wrong at the quant section then it is pretty much sure that उनका कहीं ना कहीं डीएम और वीआरसी में भी डिस्क्रिपेंसीज होंगी राइट दैट इज द फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग इज पास्ट ट्रेंड भी हमें यही बताता है कि एवरी ईयर आई डू नॉट नो व्हाई दे डू बिकॉज यू कैन क्लियरली सी टाइम सीएल या कोई भी इंस्टीट्यूट जैट की आंसर की इसीलिए रिलीज नहीं करता बिकॉज जैट आंसर्स आर प्रिटी ऑफ एंड जो भी ऑफिशियल आंसर्स होते हैं वो भी एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर या नीचे होते हैं राइट सो it is very hard to predict the right answers for the Z, but still a lot of people, especially the Cracku team, does this every year, right? So, but I want to put a disclaimer for all of you that you don't need to worry about the score that you are getting from the Cracku, right? It might be 100% correct and it might be 100% wrong also, right? So for example, if you are scoring overall 35, let's say, right? It doesn't mean that you will score around 35. You may score around 35, you may score 40 plus also, you may score 20 also, right? So there is no surety with that. Same with the person who is scoring 20 in the Cracku, right? अगर आपका 20 आ रहा है then also you will not get any idea ki is 20 good enough or not because you do not know the correct answer and a lot of things depend on the DM and the VARC part. So far if we do not know कि DM और VARC में क्या आंसर्स थे क्या नहीं थे so we can't judge anyone's score as of now. हाँ but quants का I think except 2 or 3 questions सारे questions के आंसर we got to know right तो वहां पे आप रिलाई कर सकते हो for with any source right क्रैकू पे या कोई भी यूट्यूब चैनल पे यू कैन गो एंड यू कैन वॉच देयर वीडियो राइट वहां पे आपको एक डिसेंट आइडिया लग जाएगा आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन लाइव yesterday all the answers for the quant section and almost वो answers 99% correct है right DM के we just discussed the answers right as neither you nor I know the correct answer so what I did was I did a detailed discussion about the DM answers right and I took your views also I presented my views also कि मेरे हिसाब से क्या correct हो सकता है and what is the reasoning behind that and I know at lot of places I might be wrong right but in quants I think everything is sorted and you can get a decent idea कि आपका क्वांट्स का स्कोर क्या होने वाला है एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स यहाँ पे कि अराउंड क्वांट्स की बात करें तो 8 के अराउंड 8 या 9 के अराउंड कट ऑफ होगी बट वीआरसी और डीएम में वी कांट प्रिडिक्ट द कट ऑफ ऑल्सो बिकॉज दैट अगेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्कोर ऑन द ओवरऑल स्कोर है ना तो काफी चीजों पे डिपेंड करेगा डीएम और वीआरसी की कट ऑफ तो वहां पे डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट ट्रेंड अगर मैं पास्ट ट्रेंड की भी बात करूं सो इट हैपेंस एवरी ईयर क्रैकू फर्स्ट रिलीज देयर आंसर की एंड व्हेन द ऑफिशियल आंसर की कम्स a lot of people see change in their scores right last year I know a student जिसका 5 स्कोर था इन डीएम एंड आफ्टर द करेक्ट आंसर की उसका स्कोर 12 हो गया था इन डीएम एंड आई नो ए स्टूडेंट जिसका क्रैको के अकॉर्डिंग 13 था और आंसर की जब आई ऑफिशियल तो उसका 6 हो गया था सो राइट सो ये सब चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं so there is no point in discussing व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द डीएम है ना और बहुत बार डीएम में ऐसा भी होगा कि 90% ऑफ द पीपल विल अग्री कि यही करेक्ट आंसर होगा डीएम में बट स्टिल यू माइट सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन द ऑफिशियल आंसर की और कई बार ये भी होता है कि आपको लगेगा नहीं ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये सबसे खराब ऑप्शन है और बाद में यू सी कि वही सबसे या वही एक ऑफिशियल आंसर है वही एक करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल की सो जैट के डीएम में कुछ भी डिस्कस करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट सेम गोज विद द वीएआरसी ऑल्सो राइट इन नो क्वेश्चन यू कैन से विद द श्योरिटी कि यही आंसर होगा बिकॉज आई थिंक आपने पेपर दिया तो आपको पता है वीआरसी में क्या आया था राइट है ना काफी क्रिटिकल रीजनिंग टाइप था और काफी लोगों को एक आंसर लग रहा था दूसरे लोगों को दूसरा आंसर लग रहा था इवन इफ आई डिस्कस अबाउट दैट कार्टून वाला क्वेश्चन राइट एंड a lot of people have different views on that stuff right so now it all boils down to how you interpret that particular question so यहाँ पे भी past trend में यही कहूंगा कि VRC के लिए भी
I think cutoff changes every year drastically because again depends on overall score, depends on overall performance, and VRC में भी काफी ऐसे आंसर्स होते हैं which are very hard to digest, right? So वहां पे भी I think the best point is the best strategy is to wait for the official answers and do not rely on any other source for the VARC or the DM part, right? When can we expect the final answers? So final answer key, as of now, I think only the response sheet is released and this is the general trend, right? पहले response sheet आती है and उसके बाद आपकी final answer की आती है. So अभी भी ऐसा ही होगा, right? Final response sheet is already out. तो final answer की you can expect by tomorrow or by this weekend, right? उन्होंने विंडो में 7 to 9 बोला हुआ है. So I think कल तक कैसे ना कैसे आ जानी चाहिए और काफी पास्ट में अगर बताऊं तो एक दो बार आंसर की लीक भी हो जाती है, राइट? बिफोर कमिंग आउट ऑफिशियली एक स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट की आंसर की लीक हो जाती है somehow. आई डोंट नो द रीजन, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट इट हैपेंस एवरी ईयर, राइट? और इट हैपेंस 2-3 times इन द प्रीवियस इन द पास्ट, राइट? सो वहां पे क्या होता है कि आंसर की लीक हो जाती है एंड देन यू कैन मैच योर आंसर विद दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ आंसर की एंड देन यू कैन गो अहेड, राइट? सो this is the general trend, right? And in 2-3 days, in the next 2-3 days, you will get the official answers for all the Z questions, right? Shall I still worry about it? Because even after clarifying so much about the Cracku part, about XYZ part, I think still students are worried. मान लो किसी का बहुत कम स्कोर है कि सर कितना ही बढ़ेगा इससे, राइट? और ऐसा नहीं है कि क्रैकू बिल्कुल गलत हो सकता है ना? या बाकी टीचर्स बिल्कुल गलत हो सकते हैं. देयर माइट बी अ डिफरेंस ऑफ 2-3 marks. So I would leave this up to you. अगर आपको, if you are still worried, right, it's your choice. But what I can say based on my experience that things can go either way, right? Your score can be changed significantly also, or there may be a minimum change only, right? So completely depends on the official answers, right? uh, though I respect all the teachers, I know that उनके पास knowledge है, they can predict the answers. But यार जैट का थोड़ा पैटर्न ही ऐसा है कि जैट में थोड़े से आंसर्स जो काफी अजीब होते हैं, राइट? सो इट इज वेरी 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 हार्ड टू प्रिडिक्ट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट you will be getting the right answers in the next 1 or 2 days, then why do you want to worry about the next 24 to 48 hours? You can chill and you can just wait for the next 24 to 48 hours, right? Or maybe you can focus on other things, right? A lot of calls are out and the calls for IIM Ahmedabad, Bangalore, or the other B schools will be out in the next 3 to 4 days. So better start preparing for the GDPI round. Better start preparing for the other entrance exams if you have any, right? Or maybe start reappearing for the or preparing for the CAT 2025. That's it from my side. Thank you and have a very happy day.